सिंपल जो इंडिपेंडेंट क्वेरी किए थे, तो उसमें आपने कुछ एग्जांपल या कुछ प्रैक्टिस किए या अभी तक नहीं किए, जो मैंने अपने सेशन में भी किए थे? अच्छा, सेशन में वही किए थे। ठीक है, अरुण, आर यू डूइंग एनी Yeah. आर यू डूइंग एनी प्रैक्टिसेस? Yeah, I was practicing them. Okay, so today we are so basically after the session I am giving the PDF. So the Okay. practice of the independent query and the correlate query for both. Okay. Okay, so Okay. each PDF Yeah. contains 20 questions. So you have to must Okay. solve the 20 question for each independent and Okay. correlate. Sure. Okay, Yeah. yeah. So now we are started. So today topic basically correlated query and basically we are covering this in the 1 hour. And after that, we are Okay. in the tomorrow session we are covering the one table expression and the window function like then selling, first selling like that. And after that, we left remaining one more topic, basically the string function, date function, and mathematical function. So we are covering the this whole the topic till Sunday. Okay. ठीक है, सो बेसिकली अभी तक हमारे कितने और टॉपिक्स बचे हैं? 4 टॉपिक और बचे हैं हमारे। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सिर्फ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, जिसमें हमें ज़्यादा फोकस करना है। टू हैव टू मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बेसिकली विंडो फंक्शन, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिंग अ व्यू एंड ऑल्सो द सब क्वेरी एंड क्वेरी। बाकी जो अदरवाइज रिमेनिंग जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है वो तो बेसिक्स है, वो तो नॉर्मली आना चाहिए। But if you are working in the industry, Okay. है ना, if you are working in the industry, so basically the most used function is basically query. How can you solve the particular any query या any question? ठीक है, तो हम विंडोज फंक्शन भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो हम वो करेंगे कल। सीटी एंड विंडो फंक्शन स्टार्ट करेंगे हम। एंड आफ्टर दैट वी आर कवरिंग द स्ट्रिंग फंक्शन, डेट फंक्शन एंड मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, अब हम हमारे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट अभी read the definition of the correlated query. So a correlated query is a type of a query in SQL where a subquery depends on the outer query for its value. So basically यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो हमारी सब क्वेरी है, बेसिकली ये हमारी जो सब क्वेरी है, इट्स completely depend on the outer query for its value to run that. हमें इस क्वेरी को रन करने के सब क्वेरी को रन करने के लिए ये हमारी जो सब क्वेरी है वो बाहर वाली क्वेरी के वैल्यू पे डिपेंड करती है कि हमारी बाहर वाली क्वेरी को कौन सी वैल्यू पे रन करवाना है। सपोज जैसे कि हम यहाँ पर हमारा डोंट से यूज कोरिलेटेड सब क्वेरी, हाँ यहाँ पर देखो, ये को अपन एग्जांपल अभी भी करेंगे। तो जहां पर ये हमारा जो बेसिकली दिस क्वेरी बेसिकली completely depend on the outer query. Here you can say that here we give the condition and here we also give the two. We are basically working on the one table, but we are here like working as a self join table. ठीक है, हम यहाँ पर सेल्फ ज्वाइन कैसे करते हैं उस टाइप से वर्किंग करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही टेबल को 2 बार यूज करके रखा है। एम्प्लॉय को यहाँ पर भी करके रखा है, बट हियर वी गिव द सेकंड एलियास e2 एंड आउटर क्वेरी वी गिव द e ओनली e एलियास। सो बेसिकली वी आर यूज द ओनली वन टेबल एज अ 2 टेबल। ठीक है, तो हमने सबसे सब क्वेरी में हम क्या करते हैं, सब क्वेरी में बेसिकली हम एक ही टेबल को दो बार, एक ही टेबल को यूज करने के लिए हम दो बार सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कंडीशन, जो हमारा E2 का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आईडी, वो हमारे ये E2 डिपार्टमेंट क्या है, बेसिकली दिस इज E2 टेबल, बेसिकली दिस इज और सब क्वेरी टेबल, इट्स इज इक्वल टू E डॉट डिपार्टमेंट आईडी, बेसिकली द आउटर क्वेरी टेबल। तो जो हमारी इनर क्वेरी की जो टेबल है या द ये जो हमारी जो टेबल है इनर क्वेरी की, ये कंप्लीटली डिपेंड होती है बाहर वाली क्वेरी पर। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द कोरिलेटेड क्वेरी। अगर हम कोर नाम से हमारा बना है, हाँ बना है, यूज कोर देखो। अब अगर हम पूरी होल क्वेरी को रन करेंगे, सो बेसिकली इट गिव द रिजल्ट। बट सपोज इफ आई want to run individually this query, so that basically they give the error. So unknown column department id in the where clause. Okay.
ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कहाँ से? हमारा स्मार्टफोन में था शायद। कहाँ गया? हमने कहाँ निकाला था? यूज को फाइंड द It हाईएस्ट। was same smartphone can upload this. हाँ या बट मैंने अभी वेयर आई एम पेस्टिंग द डेफिनेशन ऑफ द कोरिलेटेड सब क्वेरी, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, ये हमने यहाँ कर दी इसको एज इट इज। वी हैव टू कॉपी दैट वी आर पेस्टिंग इनटू सेल्स टेबल। हाँ, आफ्टर सेशन आई शेयर दिस फाइल विद यू फॉर द रेफरेंस। ये तो ये डेफिनेशन क्लियर है? Yes. ठीक है, सो आई शेयर सम डेटा इन द ग्रुप, सो यू हैव टू इंपोर्ट इट। जस्ट वेट अ मिनट। एम्प्लॉय डेटा सेट हमारे पास होगा शायद तक टेबल्स में होगा। एम्प्लॉय डेटा सेट, एम्प्लॉय मैनेजर डेटा सेट है ना, ऑर्डर डेटा सेट है, प्रोडक्ट डेटा सेट भी है। ओके, आई शेयर दिस फोर डेटा सेट। प्रोडक्ट डेटा सेट प्रोडक्ट हो चुका है। ऑर्डर डेटा सेट, एम्प्लॉय डेटा सेट, एम्प्लॉय मैनेजर डेटा सेट। Should I share this four data set in the group? You just have to download it and import in the particular in the database. So first you have to create a database like that. Create database or we give the core because we are working on the particular correlate subquery. So we give the creating a core database successfully created. Now you have to import this four dataset in the core database. Okay. But in the my cases I'm already import this for dataset, so that's why I'm using core. So you also use the create a database with this command, like you're writing the core. Just create this database and import these four tables in this database. And once you done, let me know. Can be done by 4 times I can select by No. So you cannot select the all the tables. Select individually. Done. Arun. that will be 2 minutes. Yeah. Yeah. Test page में
So this is CSV file. CSV files. You just share the screen. Then I can guide you. No, I give the XLS. Yeah, I give the XLS form. Excel form. है. I no, so it's completely depend you. Yeah. So hover the mouse on the MySQL workbench in the window. Workbench. Yeah, be the window. You can see that after the search. So many windows are open. In the below, in the last. So hover the. Okay. Okay, just wait a minute. Mm, just wait a minute. I share. Just wait a minute. Vishwadip, are you successfully imported this data? Uh, Movies data, shopping trends. Just wait a minute. Yes. Employee manager data set. Employee order product. Just wait a minute. Just just wait a minute. May I share this data in the CSV? Yeah, just wait a minute. Yeah, I shared. Employee with manager data set. Uh, just wait a minute. I share this data again in the CSV form. Okay. Drive.
Yeah, just wait a minute. I share this data. Okay. List here. Or employee names. Yeah, Arun, just import this data set. Uh, just wait a minute. 18 with. Order employee product employee. ठीक है. Yeah, start or not? Done. So let's start. So we are doing some practices with 4 practices. Okay, we are doing 4 practices with, on the correlate subquery. So first we have yeah. Just wait a minute. Uh, so now basically we understand the our subquery are need yeah completely depend on the outer query on there for the value of the outer query. ठीक है? We are also understand where we can
how can we create the correlated subquery? Now first now we are solving the four problem, and we are doing the for example on the correlated subquery. So basically we have to find out the problem. Find all employee whose salary is greater than the average salary of their respective department. So basically हम यहाँ पर क्या करना है, वो सारे एम्प्लॉय को फाइंड आउट करना है जिनकी जो एवरेज सैलरी है उनके जो डिपार्टमेंट से ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब हमें सारे वाले सारे एम्प्लॉय या हमें वो सारे एम्प्लॉय फाइंड आउट करना है जिनकी जो सैलरी है उनकी जो डिपार्टमेंट की जो एवरेज सैलरी है, पर्टिकुलर द रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिपार्टमेंट द एवरेज सैलरी। तो हमें उस एवरेज सैलरी से ज्यादा वाले डिपार्टमेंट जिनकी सैलरी ज्यादा है एवरेज सैलरी से ज्यादा उस डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव आल्सो यूज द select star from our I just wait a minute, I just first of all set my database. First we see the our employee table. Basically what you need to find all the employee. So first we see the employee table, है ना। अब हमें उसकी डिपार्टमेंट या फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट those employee the basically the salary of their employee is basically greater than their average salary of their respective department। हमें तो बेसिकली क्या करेंगे, फर्स्ट वी गिव द एलियास ऑफ द पर्टिकुलर टेबल बिकॉज एम्बिग्यूटी ना हो कि हमारी इनर क्वेरी के लिए हमने कौन सी टेबल यूज करी और आउटर क्वेरी के लिए हमने कौन सा एलियास यूज करा है उसी टेबल में से है। तो एम्बिग्यूटी ना हो इसलिए हमने एक एलियास दे दिया। ठीक है, अब हमें सैलरी निकालनी ग्रेटर देन। बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब इस क्वेरी को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब हमें वी हैव टू राइट द our sub query, so we have to find out the average salary of particular each department, and department is equal to 1 2 1 3, so we have to find the average salary of the each department, है ना। select we have to select the average and salary from our again employee table, and here we also give the alias e2, basically the table name inside the subquery is basically give the e2 and the outer query we basically give the e1, ये सही देंगे। अब ठीक है, अब हमें बेसिकली हाँ नहीं ना ना बेसिकली वी कैलकुलेट द एवरेज सैलरी। Okay, so basically we have to find those employee whose salary is greater than the average salary of their respective department। मतलब basically if you are working in the data scientist team और आपकी डेटा साइंटिस्ट टीम का जो डिपार्टमेंट आईडी 1 है, तो हमें उस डिपार्टमेंट से एवरेज सैलरी से भी ज्यादा कमाने वाला एम्प्लॉय चाहिए। द सैलरी ऑफ द पर्टिकुलर एम्प्लॉय is greater than the average salary of the whole data science department, so we have to find out those employee। ओके, अब बेसिकली हमारी ये क्वेरी तो हो गई है। अब ये हमें बेसिकली क्या दे देगा, एवरेज सैलरी दे देगा। सो बेसिकली द एवरेज सैलरी इज बेसिकली 58,000। बट जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारा जब ये क्वेरी रन होगी तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे क्वेरी रन होगी तो ये रो बाय रो जाएगी रन होते हुए।
if I run this query, so basically it's compiled. Yeah, we can set that it's run. It's run through row by row. So basically, what we do, we have to working on the correlated query. So basically, if the outer query on the first row, so we have to also specify the sub query is also on the first row, working on the first row. सपोज हमारी पेरेंट क्वेरी अगर फर्स्ट रो में काम कर रही है तो हमें दूसरी क्वेरी को भी उसे फर्स्ट रो के बराबर ही काम करवाना पड़ेगा. अदरवाइज इफ अवर पेरेंट क्वेरी बेसिकली वर्किंग ऑन द पर्टिकुलर दिस रो एंड अवर आउटर क्वेरी इज बेसिकली वर्किंग ऑन द दिस कॉलम, सो इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट गुड. सो बेसिकली और हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दो चीजें मैच कराना पड़ेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज मैच करानी पड़ेगी, डिपार्टमेंट आईडी. सो बिकॉज वी हैव टू फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ द ईच डिपार्टमेंट. ठीक है. अब सबसे पहले जैसे ही वॉक थ्रू होगा फर्स्ट रो में, एंड जाएगा एम्प्लॉय आईडी के पास, वन के पास, एम्प्लॉय नेम के पास एंड द डिपार्टमेंट आईडी. सो वी हैव टू फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ द ईच डिपार्टमेंट. सो बेसिकली यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी जैसे ही वन पे आएगा तो हमारी इनर क्वेरी हाउ और इनर क्वेरी इज फाइंड आउट द outer query is basically working on the particular department one. So basically यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो हमारी outer query की जो डिपार्टमेंट आईडी वन के बराबर हमारा इनर क्वेरी रन होना चाहिए या इनर क्वेरी के बराबर इज इक्वल टू होना चाहिए. तो जैसे ही हम जैसे हमारी बाहर वाली क्वेरी डिपार्टमेंट आईडी वन पे आएगी, सो हमारी आउटर क्वेरी भी हमारी डिपार्टमेंट आईडी वन पे आएगी एंड देन इज कैलकुलेट द ईच एवरेज सैलरी ऑफ द डिपार्टमेंट आईडी फॉर द डिपार्टमेंट आईडी वन के लिए. ठीक है. So basically what we do, up here we give the alias name, because if we give this E2, so basically it calculates the salary, average salary for the outer, but we are giving the 2 because we give the alias for our subquery table E2. ठीक है. And now we give the where condition. Why we give basically how the our inner query or child query is now that the our outer query basically working on the department ID one. So that's why we have to specify the our E2 department ID are equal to E dot department ID. अब बेसिकली क्या करेगा, जब हमारी इनर क्वेरी रन होगी, सो बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि जो हमारा E2 ये हमारी येली टेबल, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट की येली टेबल में इस डिपार्टमेंट आईडी बाहर वाली आउटर क्वेरी की डिपार्टमेंट आईडी के इज इक्वल टू होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. कोई कंफ्यूजन तो नहीं विश्वदीप, अरुण? अरुण या टेल मी वेयर, कहां पर कंफ्यूजन हो गया? सो फर्स्ट लाइन बेसिकली गिव हमें सारी एम्प्लॉयज चाहिए. सो बेसिकली वी सिलेक्ट द all the columns like employee ID, employee name, department is and their salary from the our employee table, and we give the alias of the particular this table E. Okay. Yeah. But how can we find the average salary of the particular each department? How we know that? So basically that's why we working on the co-related subquery. And suppose if we are not write the co-related subquery, so basically जो हमारा outer query फर्स्ट रो पे वर्किंग करेगा तो हमारी अंदर वाली क्वेरी बेसिकली द इनर क्वेरी बेसिकली फाइंड आउट द एवरेज सैलरी. सो हाउ ही नो दैट? सो बेसिकली द एवरेज सैलरी इज वर्किंग ऑन द पर्टिकुलर दिस कॉलम आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी. So that's why we are doing the what we doing. So basically we give the alias, the E2 even department is equal to this department ID for the inner query. Yeah, so it's like but not different table is working like self join. Okay. Yeah. हाँ
So basically, the how our inner query is noted. So basically, the our outer query working on the particular one column. So basically, if we run this particular this query, so basically the inner query are need to what we need basically he want to know that the if our parent query working on the particular work to on the first row, so he know that so it's working on the particular department one. So it's basically what our inner query do that. So basically inner query do the average salary, count the average salary from each two department. Suppose इसको भूल जाओ अभी, ये क्वेरी क्या कर रही है मालूम है ना आपको. सो बेसिकली फाइंड द एवरेज सैलरी. ठीक है. और हियर वी गिव द कंडीशन, व्हाट वी कंडीशन, जो हमारी इनर जो हमारे ई टू डिपार्टमेंट आईडी है, इसका डिपार्टमेंट आईडी ये इज इक्वल टू होना चाहिए हमारी आउटर क्वेरी के this query. So basically if our outer query loop working on the particular one column, so how our inner query know that the outer query working on the department first column. So that's why we write this. है ना. So that's why we write this is equal to अब if we run this क्या बता रहा है ये unknown column into the department ID. क्या हो गया, just wait a minute. अच्छा टी लिखना भूल गया. कहीं पर कुछ बाकी. हाँ. So the employee name is basically Charlie and is from department ID 1, and the average salary of the particular Charlie is basically 55,000. And if we run this individually without the given the where condition, so here we can find the average salary of the 58,000 for the whole department. Here we are not giving the particular it, and suppose select average salary from one employee and salary and यहाँ पर department ID. यार group by किसने लिखते हैं, group by from the particular department ID. So basically जो हमारी inner query है it's working like that. So basically जैसे हमारी outer query का जो loop है, जो हमारी पहले क्वेरी फर्स्ट में चलता है, अब यहाँ पर ये आएगा, ये बेसिकली चेक करेगा डिपार्टमेंट आईडी 1 का एवरेज सैलरी कितना है. सो बेसिकली काउंट द एवरेज सैलरी ऑफ द पर्टिकुलर 1 and 1. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ही ग्रुप बाय द डिपार्टमेंट आईडी 1 एंड इज काउंट द एवरेज सैलरी एंड सेल्स. हाँ यहाँ पर ये वर्किंग कर रही है हमारी इनर क्वेरी बेसिकली. बट यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ की हमारी जो इनर क्वेरी इट्स कंप्लीट डिपेंड ऑन द आउटर क्वेरी. So basically हमारी outer query का रूप first row पे होगा, then he is count the average of the particular their respective department. ठीक है. अब हमारा department ID 1 इसकी सैलरी कितनी है 52,000 एवरेज सैलरी है. and if we run this the our co-related sub query, so basically Charlie the salary of the 55,000. okay, Charlie salary is basically 55,000 and if we see the average salary of the particular one department ID 1, so the average salary of the particular department even is 52,000. So that's why the Charlie is shown because the Charlie salary is basically 55,000. No doubt. ठीक है. अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. Find the customer who had placed order greater than their on average order value. हमें वो सारे कस्टमर को फाइंड करना है कि and place order greater than their own average value. जो हमारे सबसे पहले हमारी ऑर्डर वाली टेबल देख लेते हैं. हाँ बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमें वो सारे निकालना है, सारे कस्टमर निकालना है कि जिन्होंने जितना भी अभी तक ऑर्डर प्लेस किया है उससे ऑन एन एवरेज उससे ज़्यादा ही ऑर्डर किया है. तो हमें वो सारे कस्टमर फाइंड आउट करना है
कि जिन्होंने अभी तक जितना ऑर्डर किया है उससे ऑन एन एवरेज उसने कहीं ज्यादा ऑर्डर करा है. So we also select star from orders. These are order tables. अब यहाँ पर हमें अमाउंट निकालना है कि बेसिकली वी हैव टू फाइंड द बेस्ड ऑन द अमाउंट कॉलम. ठीक है, क्योंकि हमें उसने ऑन एन एवरेज से ज्यादा ही उसने ऑर्डर करके रखा हुआ है, हमें इसे कस्टमर को फाइंड आउट करना है. So give the where condition, the basically order amount is greater than 2. What is greater than? So here we now write the our sub query. Select average and order amount from our orders table. Now here we also give the condition where customer ID. Basically here we what is the unique? Basically we give the हाँ बेसिकली हमें कस्टमर के बेस पर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से कस्टमर ने ऑन एन एवरेज से ज्यादा ऑर्डर किया है. So customer ID. So basically the outer query, if we run the outer query, so basically the outer query will run on the first column. So here we need to specify the customer ID 1 or is equal to in the inner query. So that's why the inner query find the average amount of the particular this customer ID name. So customer ID are equal to our customer ID. ठीक है, अब यहाँ पर हम बेसिकली हमारा नाम देंगे. यहाँ पर हम जैसे T2 दे दिया, जैसे हमने joins SQL joins में हमने किया था. T1 it's completely depend on what you give the alias. हमने पहले E दिया था and E2 दिया था, अब यहाँ हमने T1 दे दिया and T2 दे दिया. ठीक है, अब बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे T2 डॉट T2 डॉट और यहाँ पर हमें किससे मैच करवाना है T1 से, जो हमारी आउटर क्वेरी वाली टेबल से हमें मैच कराना है. तो T1 डॉट so the customer ID 1 basically the order amount basically 700. So particular this customer is ordered then their order average value. ठीक है, और हमें से देखना है select customer ID and हाँ ठीक है customer ID order by order amount. So from our what is the table name orders group by on the customer ID. From select customer ID. Okay, here we forget to give the comma. Error unknown column order amount. So basically we have to find the average value of the particular each customer. The average amount
particular 101 customer ID basically 600, 600, 300 and 900. And if you run this our query to find the 700 रुपए 700 customer ID 101 में, and if we check the customer ID 101, basically the average amount is basically 600, and if we run this query, so basically the result of the 700, so that's why I show the basically it's order the on and above average amount. The third question basically find product whose price in a store is above than the average price of the same product in the all store. एक बार और कि find product whose price in a store is above than the average price of the same product in the all store. हमें वो वाले सारे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है पूरे स्टोर में से जिनका जो एवरेज प्राइस है उनकी सेम प्रोडक्ट से अबव ज्यादा होना चाहिए. कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? ठीक है. Again we need to write the select star from products. See the table, the price of the particular product and store ID and product ID. तो हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जिसका एवरेज अमाउंट ज्यादा है पर्टिकुलर सारे प्रोडक्ट से उस पूरे स्टोर में. Here we give the T1 name basically, and we also give the condition where the T1 dot price is greater than. क्यों? क्योंकि हमें प्राइस को कंपेयर कराना है कि इस प्राइस से पर्टिकुलर ज्यादा होना चाहिए ऑन एन एवरेज ज्यादा. Now here we write the our sub query. Select average and the हाँ ठीक है from products table and give the T2 name, give the very condition where the T2 dot. अब यहाँ पर हम बेसिकली किस कंडीशन के बेस पे देंगे, प्रोडक्ट आईडी या स्टोर आईडी पे? Anyone guess what we matching the inner query and outer query blue on the basis of product ID or store ID? ठीक है. अभी हमें क्या निकालना है, बेसिकली प्रोडक्ट निकालना है. So that's why we matching the product ID. क्योंकि basically we have to find the average value of the product ID. T1 dot product ID. Basically ये हो गई, we have completed our sub query. So basically we get the product is basically product ID 1 and product ID 2. So जो इनका जो प्रोडक्ट इनका जो प्राइस है बेसिकली ऑन एन एवरेज ज्यादा है पूरे मॉल में. ठीक है. और अगर इसको भी हम देखना चाहें कि ऑन एन एवरेज वैल्यू सही दे या गलत दी इसने, select average of the particular price with respect to the product ID products
55 and 42, 55 and 42, तो 55 तो है और इसका 50 में 42 था तो 60 आया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये बड़ा तेज चल रहा है। ठीक है, find the employee who earn more than their average, more than their managers। हमें वो सारे एम्प्लॉय को फाइंड आउट करना है जिनकी जो कमाते हैं अपने मैनेजर से ज्यादा। So select start from employee manager। So first we see the employee ID, employee name, and the employee ID. Sorry, manager ID. So basically the manager of the Charlie is basically what? Just wait a minute, इसको हम थोड़ा sort out कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मैनेजर आईडी। सो एलिस का जो मैनेजर है वो बेसिकली 4 है, डेविड है। ओके, एंड द Bob is also the manager of the Bob is also the David, and the manager of the Charlie is basically Elias। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4001 यहाँ पर इसकी बेस्ड ऑन दिस कंडीशन दी रखी है। ठीक है, और यहाँ पर इनकी सैलरी दी रखी है। Where salary is greater than, now we close the, now we have to write our sub query। Select first give the name, m दे दिया हमने मैनेजर वाली सेल से। सो सिलेक्ट m डॉट सैलरी, वी हैव टू फाइंड द एवरेज सैलरी। नहीं, हमें एवरेज सैलरी, हमें यहाँ पर जो मैनेजर से ज्यादा कमाता है एवरेज सैलरी का नहीं देख रखा हमने यहाँ। तो हम क्या करेंगे, m डॉट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय मैनेजर टेबल से and give the m2 num where m2 dot employee ID equal to m1 dot manager ID, and successfully write this for sub query। Sorry, just wait a minute। हाँ ठीक है, ये हम ऐसे देंगे हमारी कंडीशन। अब यहाँ लिखेंगे हम m डॉट सेट। कोई डाउट तो नहीं इसमें? फिर हम देख क्या बात कर रहे हैं। ये सब कोई भी एम्प्लॉय ही नहीं है। क्या बात कर रहा है ये हमारा m डॉट एम्प्लॉय नेम लिखेंगे, m डॉट सैलरी नहीं, हाँ सैलरी, और m डॉट मैनेजर आईडी। और ये तब भी नहीं बताना है, क्या बात है, ऐसा कुछ है नहीं है।
एम्प्लॉय मैनेजर सैलरी, एम्प्लॉय मैनेजर, एम्प्लॉय मैनेजर। अरे यार इसने एवरेज प्राइस निकाल दी। चल क्यों रहा है यार क्वेरी। कोर एम्प्लॉय टेबल का नाम सही लिखा है। अच्छा यहाँ पर मैनेजर का नाम गलत आ रहा है बार बार। हाँ मैं वही सोचूं कि इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है कि मैनेजर का नाम गलत आ रहा है इसमें। फिर भी गलत चल रही है। हाँ 83, हाँ हाँ हाँ। यहाँ मैंने जो या हाँ स्पेलिंग मिस्टेक होती है हमेशा मेरे से। ठीक है। So the Charlie is employee. So basically, who earn more than their manager. So we can see the manager of the Charlie. चार्ली का मैनेजर कौन है? वन। वन कौन है? एलिस। सो बेसिकली जो हमारा चार्ली है, द चार्ली सैलरी बेसिकली 55,000 एंड देयर मैनेजर income Ellis, the income salary of the Ellis basically 50,000. So that's why Charlie show that because the Charlie's salary is basically 55,000 and their manager Ellis is basically 50,000 salary. यहाँ देख सकते हैं Charlie salary is basically 50,000 and the manager ID 10. ठीक है, सो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे प्रैक्टिस। 4 प्रैक्टिस कर लिए हमने। मैंने कहाँ पर, हाँ मैंने ग्रुप में एक प्रैक्टिस सेट भी शेयर कर दिया है। ठीक है ना, जस्ट वेट अ मिनट। ये इस प्रैक्टिस सेट्स के लिए डेटा सेट्स कम फुलफिल कर रहा है। फाइंड द एम्प्लॉय विद द मैक्सिमम सैलरी इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, retrieve the total number of orders placed each employer where the order amount is greater than 5,000। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। इफ द डेटा सेट आर मैच with this sub query and questions, so that's why I share some data। ठीक है, अब now we have to understand the view। अब बेसिकली ये व्यू होता क्या है? जस्ट वेट मिनट, मेरे को डेटा सेट पहले फाइंड आउट करना था। डेटा सेट कहाँ पर है हमारे? वेयर इज द डेटा सेट? वेयर इज द डेटा सेट? वेयर इज द डेटा सेट? For the practice sets, where is the data set? ठीक है, पहले मैं डेटा सेट में इसको बाद में शेयर कर दूंगा। वी हैव टू स्टार्ट द व्यू। या इसके मैं डेफिनेशन आपको दे देता हूँ उठा के। इसको जस्ट पहले
ठीक है. So basically we have to understand what is a view in the SQL. So a view in a SQL, a saved SQL query that act as a virtual table. So basically जो हमारा view क्या होता है, जो SQL को एक query को save कर लेता है. And if we run this view after if you run this, yeah, if we get the data from the view, so it's acting like the, it's working like the actual table, yeah, virtual table. है ना, basically it's working like that. He save the particular script that we write, yeah, particular query, he save the particular query, and now he's working like and it's act like the actual table, yeah, virtual table, we can say that the, and it can fetch data from one or more tables and present it in a customized format. ठीक है. एंड बेसिकली क्या करता है ये, it can fetch data from one and more the table and present in the customized table. So suppose if we apply the joins function in the view, and we save the and we save this script, yeah, we save this is we want to save this result in the view. So if we run in the future view, so we he give the data as this format that we want, that we save script in our view table. ठीक है. So what is the like benefit that we use the view? So simplify complex query. So encapsulated complex query joins, here you can see that joins. So encapsulated complex joins and condition into a single object. Enhance security, restricted access to the specific column or row, and present data flexibility, provide tailored data view for different users. So suppose we have to understand the first point, simplify the complex query. Suppose if you if how can take an example. Suppose if you are working on the multiple columns, yeah, multiple tables, and basically you need the data uh, that you want in the and that are distributed in the across table, and you need specific data multiple time. So what you do, so basically you create a particular view and you get the specific column from the particular multiple column. And if you working on the particular this column, so you don't need to again write the again and again to a joins function. You just have to write the select star and give the view name. You just get it your uh, data that you want and that you write in the previous. ठीक है. So basically simplify complex query, you don't need to write again and again joins, and again you want to joins the and see the data. So first if you multiple if you do the joins and save as a view, so it give the result as the same in the future that you ठीक है. Enhance the security, and suppose if you are data analytics, yeah, data scientist, and suppose you want to give the access to the another user, yeah, another data scientist. So suppose we can take example of e-commerce website. So in the e-commerce website, the user also have a username, user id, and their password, and what they order and what is the amount. And suppose you want to give the only the amount, address, and where what he ordered, the particular user. So basically you first create a view and give the specific column that you want. You don't need to give the password because password is not as necessary in the and the analytics, yeah, or we can say the analysis. So suppose you not give the whole table, instead of you give the specific column that you want to give that you want to share with that. ठीक है. Now this basically this is a script. Basically the view basically save the script. Suppose if so this is how can we join? So here we can see that the joins. Now just wait a minute, I sure if we have the ठीक है. अभी तो हमारे पास कोई सी टेबल नहीं है.
सपोज if we need the data, specific data from 3 or 4 different kind of table in, okay, so basically आप क्या करोगे, एक बार आपने SQL का if you're writing the SQL query one time, है ना, particular, so basically if you need the data, so you write this particular query. So basically what we actually do, so we basically save this query as it is, and he save this query as a file, yeah, temporary file. And if you run like if you I give the data, and if you want to see the view in the future, so basically if you run this, select star, and here you can view the view name. So what actually this query does, so basically this query is going to the view, and view basically run this particular query that he saved in the previous that we write. ठीक है, so basically it's not a virtual table, basically he save the particular query. So suppose if you want to create a view particular this call the particular this query, so basically what we does, we basically save this script, and if we run this script, if you want to view, so basically what does the view basically going in the file, and is run again this query in the background, and is take the data from these tables and show the table, okay. कोई इसमें डाउट तो नहीं है? अब बेसिकली हम इसका सिंटैक्स देखते हैं, how can we create a view. So basically you first write a create, give the view, and here you give the view name, okay, and also you give the alias. Now select star from employee. अब यहाँ पर आप स्पेसिफिक कॉलम लिख सकते हो, if you want to if you want to save the specific column, and after the query you can just forget this query, and if you want to some joins and need a specific kind of data and apply the aggregation function, windows function, so you can do anything. Just you have to write, if you want to create this if you want to create view of particular this query, so just create, write the create view and view name and give the alias. So basically what view does, so view basically does save this query that you write below this, okay. So now we have to learn how can we create a view. So first create view, and I want to give the view name, suppose क्या दे सकते हैं हम, name, employee, and their salary. So I want to only see the save, I want to save this employee name and their salary, and also department ID. Oh, just wait a minute, यहाँ पर हमने व्यू का नाम देना था, बेसिकली हमने कॉलम का नाम दे दिया, बता देते हैं। व्यू नेम बेसिकली हम कह सकते हैं स्पेसिफिक लिख देते हैं, ठीक है, एज. So now we write anything that you want, apply joins, give the apply the aggregation function, give the dense rank या windows function that you want to apply. So select star from our employee manager, है ना. अब suppose if we run this query individually, हम देख सकते हैं हमें यहाँ पर क्या चाहिए, पर्टिकुलर हमें एम्प्लॉय का नाम चाहिए, EMP
नेम, देयर सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी, कोई कॉलम है नहीं तो उसको हटा देते हैं। ठीक है। अब सपोज इफ यू आर वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड you want to give the particular their you want to share the some data with your seniors या other team member. So do you so if you don't want to give the salary, yeah, don't want to share the salary column, so basically what we do, you just write the employee name and their manager ID, ठीक है, and just also EMP employee ID name for employee table, ठीक है. So basically if you write this query, you just create a successfully view. Now where you can find the view that you have created. So if you refresh this, now you can see the view in your database. Core view. Here you can see the specific. Here we created. And how can you see the particular view? So select start from. You can also see that as a virtual table. Here I am given the view. So you can see that what we want to is employee ID, employee name, and then manager ID. So here we don't want to share the salary column, so that's why the salary column is basically hide, and you can give the access particular view. ठीक है ना? You can also see that as a virtual table. ठीक है? And you want to update, so update uh, specific and set, कह सकते हैं हम यहाँ पर कुछ अपडेट करना हो, जैसे कि डेबिट में हमें कुछ एम्प्लॉय आईडी देना हो, तो हम देख सकते हैं बॉब, तो सेट मैनेजर आईडी आर इज इक्वल टू बॉब, where employee ID are is equal to 4. So you can update this, and if you see this here, David is basically the manager of the, now David is basically Bob, so you can update it. अब जल्दी से इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि इसको थोड़ा सा चेंज कैसे कर सकते हैं. So if you want to change like the, क्या कर सकते हैं मैं, कुछ भी हम कैसे कर सकते हैं, हाँ, जैसे कि अल्टर व्यू, give the view name and what you want to change, so select. Now I want to show the all the data that are present in the employee manager table. Oh sorry, from employee manager table. ठीक है. अब जैसे हम इसको रन करेंगे अल्टर व्यू पे, तो बेसिकली हमारे अल्टर टेबल, व्हाट वी डू, अल्टर टेबल बेसिकली modify the our exiting, and if you see the view, here you can also see the salary column is also visible because we update, yeah, we change. You can update individually or you can change. You can update individual values and you can change the alter by the specific that you want to change. ठीक है. और कौन सी इसमें आता है, ठीक है. अब how can we drop the view? Just simply drop. ये है इतने शायद, जस्ट वेट अ मिनट, ड्रॉप व्यू करेंगे.
अच्छा इसको इसमें लिख दिया स्मॉल, ठीक है। ड्रॉप व्यू specific, just write it here. You can see the specific, and if we run this here, the drop जो basically view specific is gone, it's completely deleted। ठीक है, ये होता है हमारा काम। इसमें कुछ वो तो नहीं डिफरेंस। ठीक है, तो मैं फाइल आपको शेयर कर देता हूँ। डेटा आपके पास है, तो कुछ डेटा होगा तो मैं 11 बजे समथिंग शेयर कर दूंगा डेटा सेट क्वेरी में, ये जो प्रैक्टिस है इसमें डेटा सब। अभी तो इस चीज की प्रैक्टिस करो, अगेन एंड अगेन, बार बार इसको करो 2 से 3 बार, फिर